Welcome to this lecture on Applications of Mean Value Theorem by Dr. Rajesh Singh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. So yesterday we did three mean value theorems, right? First is Rolle's theorem, then mean value theorem, and then Cauchy's mean value theorem or generalized mean value theorem, right? Yes, sir. And we have seen their geometrical interpretation also. So today we will continue with that, and we will see that we can obtain Rolle's theorem from mean value theorem, and we can obtain mean value theorem from Cauchy's mean value theorem. Okay, so we will observe that, and then we will see some applications of mean value theorems. So this whiteboard is visible to everyone. Yes, sir. Okay, so first we will observe that we can obtain Rolle's theorem from mean value theorem. Okay, so mean value theorem implies Rolle's theorem. Why? Rolle's theorem is Suppose you have a function, let f be a function from AB to R, AB to R, such that you have three conditions. Okay, first, f is continuous on closed interval AB. Second, f is differentiable on open interval AB. And third, f of A is equal to f of B is equal to 0. And we have to show f dash C is equal to 0 using mean value theorem. Okay, ठीक है, then we will have this Rolle's theorem, क्योंकि Rolle's theorem में यही होता है कि f dash C should be 0. So we have to show that there exists for some C belonging to AB. So this is what we have to show. So how you will prove it? Since f satisfies both the conditions of mean value theorem, so there exists C belonging to AB such that क्या होता है mean value theorem से f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a, right? And which is equal to 0. Why? Because fa is equal to fb, right? So these two are equal, so we have this equal to 0, hence proved. Okay, so this is what we needed. We needed to find when C says that derivative of f at that point is 0, and we are able to get that using mean value theorem. Okay, so mean value theorem implies Rolle's theorem, right? yes, sir. Next, Cauchy's mean value theorem. Next, we will show that Cauchy's mean value theorem or generalized mean value theorem. Cauchy's mean value theorem implies mean value theorem. Okay, so this is what we are going to do. So let f be a function, f from AB to R be a function such that first, f is continuous on closed interval AB. Second, f is differentiable on open interval AB. To show there exists C belonging to AB such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a. So अब हमें यहाँ पे Cauchy's mean value theorem का यूज करना है, यूजिंग Cauchy's mean value theorem. ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है यूजिंग Cauchy's mean value theorem. So Cauchy's mean value theorem के लिए हमें क्या चाहिए? We need two functions, right? एक f और एक g, और g ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव should not be 0.
ठीक है, जो और उससे हमें ये कंडीशन आ जानी चाहिए, तो कैसे आएगी ये? जी को क्या ले हम, जो ये कंडीशन आ जाए हमारा। सो बेसिकली इफ यू लुक एट दिस, सो अगर कंपेयर करोगे f dash c upon g dash c equal to fb minus fa upon gb minus gb, if you will compare these two things, एक तो हमें ये प्रूव करना है, राइट, वी हैव टू प्रूव दिस fb minus fa upon b minus a, and we have to use this formula, क्योंकि जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम से तो यही आएगा, gb minus ga. so what g we should take, इसको कंपेयर करो. सो g का बताओ, g क्या लेना चाहिए हमें, g इज इक्वल टू क्या डिफाइन करना चाहिए. सो हमारा क्या होना चाहिए, g डैश शुड बी इक्वल टू 1, राइट, क्योंकि यहाँ पे 1 है, राइट, यहाँ पे 1 है. सो वी नीड g डैश इक्वल टू 1, gb शुड बी इक्वल टू b, ga शुड बी इक्वल टू a. सो ऐसा कौन सा फंक्शन होना चाहिए, g डैश शुड बी इक्वल टू 1, gb इक्वल टू b होना चाहिए, ja इक्वल टू a होना चाहिए. सो व्हिच फंक्शन सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी. gx is equal to यस, gx इक्वल टू, अगर x ले लेंगे तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट. और इसका डेरिवेटिव क्या है, g डैश x इज इक्वल टू 1 व्हिच इज नॉन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ab. सो ये उसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि इट इज नॉन जीरो. ठीक है, सो वी विल टेक दिस फंक्शन, राइट. सो लेट अस ट्राई राइट. So let gx is equal to x for all x belonging to ab. Then first f g are continuous on ab, right, being a polynomial function. Second, f g both are differentiable on open interval ab, right, because f given है और g जो है हमारा इस तरह का फंक्शन है. And third, g dash x is equal to 1 which is non-zero for all x belonging to ab. So by Cauchy's mean value theorem, there exists a c belonging to ab such that क्या होगा, f dash c upon g dash c is equal to fb minus fa upon gb minus ga. So putting the values, so this implies f dash c by 1 is equal to fb minus fa upon b minus a, that is f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a, and it's proved. Okay, so we have seen, so what we have seen that Cauchy's mean value theorem implies mean value theorem, right? Yeah. And mean value theorem implies Rolle's theorem. So mean value theorem is a generalized version of Rolle's theorem, and Cauchy's mean value theorem is a generalized version of mean value theorem, and hence it is a generalized version of Rolle's theorem also, right? Okay. Yes. So this is the most generalized version, then this, and then this. Clear, everyone? Yes. Okay. Now let us see some applications of mean value theorem. So we will first prove some results, and then we will prove some inequalities using this mean value theorems. Okay. Applications. Mean value. Sometimes we are going to use Rolle's theorem. Sometimes we will use mean value theorem. Cauchy's mean value theorem we rarely use. Okay. Applications of mean value theorem. So let us start with the first theorem that we are going to obtain. So first we are going to prove that
if the function is constant then its derivative is 0. ठीक है, this we are, वैसे इसको हम डायरेक्टली उससे भी ला सकते हैं यूजिंग अवर लिमिट डेफिनेशन, बट इसके थ्रू भी मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू भी वी कैन ब्रिंग इट. ओके फाइन. अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी दैट इट्स डेरिवेटिव भी 0, राइट. क्योंकि जो लिमिट अगर इससे करें क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, सो लिमिट x टेंड्स टू c fx minus fc upon x minus c. So this being constant, जो भी constant value होगी ये दोनों same होगी, so it will become 0, right? 0 by x minus c, which is 0. So you will get derivative 0, right? But we can also prove this result using our this mean value theorems. So let us prove this using mean value theorem. So given is f is continuous on closed interval AB, right? Second, we are also given f is differentiable on open interval AB. And third, okay, sorry, ये उल्टा है उसका. We are given that f dash x is equal to 0 for all x belonging to AB. Okay, so ये उल्टा है. To show f is constant on I. Because we have to show that it is constant on I. So how to prove this? So suppose f is not constant, so then what will happen? So we will use the contrapositive approach. So suppose f is not constant on AB, then what will, yes, what will happen then? The function constant नहीं है तो क्या होगा? f of a is not equal to f of b. So there will exist, so basically there will exist 2 points, right? There will exist 2 points in the interval AB such that the function does not, the values of the function does not coincide at those points, right? At least 2 points तो ऐसे होंगे ना जिस पे differ करेगा, ठीक है? So then there exist say x1, x2 belonging to AB, ठीक है, with, और हम x1 को less than x2 मान लेते हैं, ये मान सकते हैं 2 पॉइंट्स ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, एक बड़ा एक छोटा होगा ही उनमें से. सो x1 को ही छोटा मान लेते हैं such that f of x1 is not equal to f of x2, right? They will differ at 2 points, right? At least 2 points पे तो difference होगा ना, क्योंकि f is not constant, so किसी 2 points पे तो they will differ with each other, right? So f of x1 is not equal to f of x2. Then आप क्या करेंगे, हम इस इंटरवल पे x1 x2 इंटरवल पे हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देंगे, ठीक है? Now f is continuous on x1 x2. Why it is continuous on x1 x2? Yes, why it is continuous on x1 x2? Yes, by mean value theorem there exists C belonging to x1 x2 such that f dash C is equal to fx2 minus fx1 upon x2 minus x1, ठीक है? Yes, Because x1, x2 lies between closed interval a and b, and f is continuous on AB. That's why. because x1 x2 is a subinterval of, since x1 x2 is a subinterval of AB पे ये conditions है हमारे पास, continuity और differentiability, तो इसलिए इस पे भी हो जाएगा सब इंटरवल पे भी. So अब हमने पूरे पे ना लगा के AB पे ना लगा के we have applied on this x1 x2 interval, right? हमने इस पे काम करा है. So इसमें एक C मिल जाएगा हमें x1 x2 such that ये property satisfy होगी. Now is it 0?
Is right side 0? Yes, It sir. is not equal to 0. Since fx2 is not equal to fx1 and x2 is not equal to x1, so this is non-zero. ठीक है, this term is non-zero. So यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, f dash c is not equal to 0 for some point, but यहाँ पे क्या given है, third condition will given that the derivative is 0 at all the points in the open interval AB. Contradicts the fact that f dash x is equal to 0, is equal to 0 for every x in open interval AB. यहाँ पे हम कह रहे हैं हमारे पास एक पॉइंट है जहाँ पे नॉन जीरो है, बट यहाँ पे हमारे पास गिवन के it should be 0 at all the points in the open interval AB. Hence, our assumption is wrong and f is constant on AB. ठीक है, is it fine everyone? तो इस रिजल्ट के थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि if the function is constant then its derivative is 0 and if its derivative is 0 then the function is constant. ठीक है, is it Yes, fine sir. everyone? यस सर. सर इसे हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, कॉन्ट्रापोजिटिव अप्रोच ना लेकर डायरेक्ट. हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हो. फिर क्या करोगे तुम, you will start with any two arbitrary points in the open interval AB. ठीक है, यस सर. उसमें फिर ये कंडीशन नहीं लोगे, you will start with any two arbitrary points, फिर ये दोनों कंडीशन तो होगी उस पे. so by mean value theorem you will get this. अब यहाँ पे इसको 0 ले लोगे, right? given is this is 0, so वहां से क्या जाएगा, fx2 equal to fx1 आ जाएगा. so फिर हो गया कांस्टेंट फंक्शन. यस ठीक है, अगर तुम्हें डायरेक्टली प्रूव करना है तो डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हो. उसके लिए क्या करना होगा, यू विल स्टार्ट विद लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू a b b any two points. ठीक है, then without loss of generality you will assume that x1 is less than x2. ठीक है, and then you will say f is continuous on x1 x2, f is differentiable on x1 x2. so by mean value theorem you will have f dash c equal to fx2 minus fx1 upon x2 minus x1. Now this is 0, so this implies 0 equal to fx2 minus fx1 upon x2 minus x1, because we are given the derivative is always 0, right? so this implies fx2 is equal to fx1 and hence the function is constant because you picked any two arbitrary points in the, so the function is having the same value at all the points, right? यस this सर. implies f is constant. तो इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते थे प्रूफ. सो इट्स योर चॉइस. ठीक है, सेम ही प्रूफ आएगा, बस थोड़े से लैंग्वेज में चेंज हो गया और कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम प्रूफ है. फाइन एवरीवन? यस अगर सर. डायरेक्ट लिखना हो तो यू कैन प्रूव इट डायरेक्टली आल्सो. दैट्स ओके. सो लेट अस टेक अनदर result. The next is, it says if the derivative of two functions are equal then the functions differ by a constant. Suppose that f and g are continuous on I and that they are differentiable on AB and that the derivatives are equal. Both f and g का दोनों का derivative equal है. You have to show that there exists a constant c such that f is equal to g plus c. So how you will prove this? Yes? कंसीडर कर लेंगे. क्या कंसीडर करोगे? सर एक फंक्शन कंसीडर कर लेंगे. आओ, क्या कर लोगे फंक्शन को? सर एफ एक्स माइनस जी एक्स. h from AB to R as hx is equal to fx minus g. Take the difference of the two functions. ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, f minus g. okay, then by algebra होगा of
continuity and differentiability. अच्छा, ये करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हम पिछली वाली थ्योरम का यूज कर सकते हैं ना, पूरा डायरेक्ट हम मीन वैल्यू थ्योरम ना अप्लाई करके वी कैन डायरेक्टली राइट देन h dash x is equal to f dash x minus g dash x, right, which is equal to 0 since f dash x is equal to g dash x for all x belonging to open interval ab. So hence h dash x is equal to 0 for all x belonging to ab. So by previous theorem, it implies that h is a constant function. That is, there exists a constant c such that hx is equal to c for all x belonging to ab. So this implies fx minus gx is equal to c for all x belonging to ab, and this implies your fx is equal to gx plus c for every x in ab. Hence proved. Okay. So if the derivatives of two functions are equal, then the two functions differ by a constant. Okay, is it fine? जो हम अगर तुमने if you remember जो डेरिवेटिव करते, so उसमें fx का डेरिवेटिव निकालते थे fx dx, तो जो फंक्शन आता था उसमें you used to add a constant, right? Yes, sir. Remember? So वो वैसे क्योंकि ये जो डेरिवेटिव सेम होता है तो इसलिए ये कांस्टेंट ऐड कर देते थे हम वहाँ पे सॉल्यूशन में. जैसे अगर sin x का डेरिवेटिव करोगे तो यूज टू राइट sin, राइट, इसका करते थे तो यूज टू राइट माइनस cos x प्लस c, राइट. तो क्योंकि ये जो बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका डेरिवेटिव sin x होता है. यस, कोई पूछना चाह रहा है? यस, एनीवन वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, now we are going to prove that a function is increasing on an interval if and only if its derivative is positive, and function is decreasing on an interval if and only if its derivative is negative. Okay, so we are going to use increasing and decreasing functions. So increasing and decreasing function. So what is the definition of increasing function? When you call a function to be increasing, than x, yes, x1 less than x2 should imply fx1 is less than equal to fx2. yes. Okay, so this is the definition. Increasing में क्या होता है? ये याद रखना है हमेशा. Increasing में क्या है कि if you are increasing the number, so if you are increasing the number, then the value of the function should also increase, right? If you are increasing the number, the value of the function should also increase. और decreasing में क्या होता है? If you are increasing the numbers, the value of the function should decrease. ठीक है, ये याद रखना है बस. x1 less than x2 should imply fx1 greater than equal to fx2. और स्ट्रिक्ट में यही सब स्ट्रिक्ट हो जाएगा. स्ट्रिक्ट में यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज आ जाएंगी. ठीक है, इज इट फाइन? Is it clear everyone? Yes, sir. Okay, let us prove then this theorem that if the function is increasing, then its derivative is positive, and if the function is decreasing, then its derivative is negative. So A part prove करेंगे, B part will follow on the similar lines. So B part हम नहीं prove करेंगे. It can be proved on the similar lines, so you can try on your own. Okay.
हमें शो करना है f is increasing on I if and when the derivative is positive. Okay, if and only if the derivative is positive on for every x in I. ठीक है, so कैसे प्रूव करोगे? सपोज f is increasing on I, ठीक है, I कुछ भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है, क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, एनीथिंग. ओके, to show f dash x is greater than equal to 0 for all x belonging to I. ठीक है, so how you will prove this? हम लोग नंबर एज्यूम कर लेंगे x1 एंड x2. नहीं, सीधे डेरिवेटिव ले लो. लेट्स सी बिलोंग टू I be any point. Okay, so let C belong to I be any point. So we are given that f is differentiable, right? Differentiable है, since f is differentiable on I, so this implies f is differentiable at C. So this implies f dash C is equal to fx minus fc upon x minus c. Sorry, limit भी हो जाएगा यहाँ पे. Limit x tends to c fx minus fc upon x minus c. Now what is the sign of this? Yes, what is the sign of this? अगर x greater than c है, ग्रेटर देन 0. x greater than c implies fx is greater than fc. So दोनों पॉजिटिव हो गए, right? And Yes, sir. x less than c implies fx is less than equal to fc. So इस केस में दोनों नेगेटिव हो गए. So overall you will get positive. ठीक है, since is increasing, right? So since f is increasing, so x greater than c implies fx is greater than equal to fc. x less than c implies fx is less than equal to fc. So या तो दोनों ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है. So overall you are getting that it is positive. माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है. So you are getting that f dash is positive. ठीक है, so since C belong to I is arbitrary, it follows that f dash x is greater than equal to 0 for every x in I. Fine. So वन वे हमने कर लिया, वन वे डायरेक्ट हो गया. अभी हमने कोई मीन वैल्यू थ्योरम यूज नहीं करी है, ये डायरेक्ट बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड इंक्रीजिंग फंक्शन से आ गया, राइट? क्लियर? Yes. Conversely, assume that f dash x is greater than equal to 0 for I. To show f is increasing on I, so let x up दो point pick कर लेंगे arbitrary. Let x1 x2 belongs to I be such that x1 is less than x2. ठीक है, so we picked any two arbitrary points in I such that x1 is less than x2. तो हमें शो करना है fx1 is less than equal to fx2. हमें ये शो करना है, ठीक है? Is it fine? Now f is continuous on x1 x2. f is differentiable on x1 x2. ठीक है, so by mean value theorem there exists C belonging to x1 x2 such that f dash c is equal to fx2 minus fx1 upon x2 minus x1. So that implies fx2 minus fx1 is equal to f dash c
times x2 minus x1. Now what is the sign of this right side? Greater than equal to 0. ठीक है, ये तो दोनों इसलिए हो रहे हैं क्योंकि this is sub interval of I and f is differentiable on I and differentiability implies continuity, right? Differentiability implies continuity. So इसलिए ये दोनों conditions hold कर रही हैं. And because we are given derivative is positive and we are assumed that x2 is greater than x1. So this is positive. So overall this is greater than equal to 0. Since f dash c is greater than equal to 0 and x2 is greater than x1. So both are positive. So this is positive. So hence fx2 is greater than equal to fx1. So by definition, f is increasing on I. Okay. So we started with any two arbitrary points with x1 less than x2 और हमें क्योंकि increasing show करना था तो हमें show करना है कि fx1 should be less than equal to fx and we are able to show that fx1 is increasing on I. ठीक है, B part को खुद से prove कर लेना. It is on the similar lines. Can be proved on the lines similar to A. Alternatively, you can. लेकिन ये एग्जाम में मत यूज करना क्योंकि इसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना पड़ेगा. F is increasing on I is equivalent to saying that minus f is decreasing on I if and only if minus f is increasing on I, and which is equivalent to saying that the derivative of minus f, right? So minus f dash x is greater than equal to 0 for all x belonging to I, which is equivalent to saying that f dash x is less than equal to 0 for all x belonging to I. So यही प्रूव करना था हमें. So इससे भी आ जाएगा, माइनस f के यूज से भी आ जाएगा using part A, or we can directly prove on the line similar to A. ठीक है? Okay, is it fine everyone? Yes, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, so ये वाला प्रूफ वैसे माइंड में रखना, बट एग्जाम में अगर प्रूफ डायरेक्ट प्रूफ करने को आ जाए तो इसको मत लिखना. ठीक है, इसको डायरेक्टली जो ये इस तरह से, क्योंकि 5-6 नंबर का है ये, तो इसको इस तरह से ही करना पूरा जैसे अभी हमने करा है. ठीक है, एक बार जैसे करा है उसी लाइंस पे कर लेना. Let us do this theorem. क्वेश्चन कर लेते हैं. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या होती है? Strictly increasing x1 less than x2 implies fx1 is strictly less than fx2. ठीक है? Yes. प्रॉपर डेफिनेशन वैसे ही लिख लेना, देख लेना. बाकी ये मेन आइडिया है कि if x1 is strictly less than x2, then fx1 should be strictly less than fx2. So now we are given that I is an interval, f is a function which is differentiable on I. We have to show that if f dash is positive on I, then f is strictly increasing on I. So given is f dash x is greater than 0 on I. To show f is strictly increasing on I. So how you will prove it? Yes, let x1 x2 belong to I be such that x1 is less than x2. We have to show that fx1 is strictly less than fx2. So same कोई चीज apply कर दोगे. Now since f is continuous on x1 x2, right? F is
differentiable on open interval x1 x2. Why it is so? Because your x1 x2 is a subinterval of I and f is differentiable on I, and differentiability implies continuity. So ये दोनों properties hold कर जाएंगी. So by mean value theorem, same, there exists C belonging to x1 x2 such that f dash C is equal to fx2 minus fx1 upon x2 minus x1. So implies fx2 minus fx1 is equal to f dash C into x2 minus x1. Now this is strictly positive. Why? Because your derivative is strictly positive. This is given. Okay, and x2 is strictly greater than x1. So this is strictly positive. This is strictly positive. So overall, this is strictly positive, and this implies fx2 is greater than fx1. Hence, f is strictly increasing on I. Okay. Yes, is it fine? So if the derivative is strictly positive, then the function is strictly increasing on I. But converse is not true in this case. Agar function is strictly increasing on I, then the derivative may be 0 at some point. Okay. Increasing में देखा if and only case of increase it is if and only if, right? But यहाँ पे it is only one way we are proving. Other way may not hold. Note, converse of last question need not be true. That is, f may be strictly, f if strictly increasing on I need not imply f dash x is strictly greater than 0 for all x in I. Can you give an example for this? Yes, a simple example. Equal to x square. इसका डेरिवेटिव जो fx equal to X square. x square. हाँ, x square तो नहीं, वो तो आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, उसमें इंक्रीजिंग होगा. Sir, x cube. X cube for all x belonging to any interval containing 0. ठीक है, कोई भी इंटरवल 0, क्योंकि 0 पे ही 0 होता है, बाकी सब जगह तो ये पॉजिटिव होता है. ठीक है. So f dash x is 3x square. ठीक है. Yes. For all x belonging to -1 to 1, so f dash 0 is equal to 0. So f dash x is greater than equal to 0 for all x in -1 to 1, right? But f dash x is not strictly greater than 0 for all x in -1 to 1. So at one point it is 0. Okay. Also, f is strictly increasing on -1 to 1, right? Yes, is it strictly increasing? Yes, sir. In fact, you can prove it also. If x1 is less than x2, in fact for x1 less than x2, in fact for x1 less than x2, how you will prove this? fx2 minus fx1 is x2 cube minus x1 cube, which is equal to x2 minus x1 on x2 square plus x1 square plus x1 x2. So how it is positive? Yes, why this is positive?
Because x1 is less than x2, so x2 minus x1 will be positive, and x2 x square plus x1 square plus x1 into x2 is also positive. देखो x2 is greater than x1, so this is strictly positive. ठीक है, और Yes. ये जीरो क्यों नहीं हो सकता या ये नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? This you have to explain. So this is equal to x2 minus x1. इधर से x2 कॉमन, इन दोनों को क्लब कर लिया हमने, ठीक है, we are clubbing these two. So x2 plus x1. Yes, now अब बताओ why, देखो this is positive, ठीक है, this is positive. x2 is negative, तो क्या होगा? If x2 is negative, तो क्या होगा? सर ये सम में This- नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो देखो जाएगा. this, yes, this will be negative, this will be negative, so overall it is positive. This is positive, so greater than 0, right? 0 तो है नहीं Yes, है, sir. क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही 0 हो सकता है. अगर कोई एक 0 है तो बाकी तो अपने आप पॉजिटिव हो गया, ठीक है. अगर x1 0 है, ठीक है, if x1 is 0, then this is 0, this is 0, so ये x2 square will be positive. अगर x2 0 है तो x1 square will be positive, these two 0, so overall it is positive. अब एक केस रह गया कि अगर दोनों नेगेटिव है, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी ये दिस इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अगर दोनों नेगेटिव हुए तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ओवरऑल पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, so this will be greater than 0. Okay, you can check it. So this implies fx2 is greater than fx1, hence proved. So अभी कितना टाइम रह गया? Okay, time is over. So this much is enough for today. ठीक है, कल जो है हम कल we will do some inequalities. एक दो रिजल्ट और करेंगे और फिर कुछ inequalities करेंगे, ठीक है, एंड देन वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी प्रूव करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? यस, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है? फंक्शन हैज मैक्सिमम अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, राइट? एंड फंक्शन हैज मिनिमम इफ द साइन ऑफ डेरिवेटिव चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. रिमेंबर ये रिजल्ट जो तुम 12th में करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. सो यू चेक द साइन, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो सी, फिर यू चेक द साइन. इफ इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन ऑफ एफ डैश, राइट? पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है तो फंक्शन इज क्या था यहाँ पे? सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है तो सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, राइट? ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा है और फिर नेगेटिव यहाँ से साइन चेंज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है. सो ये वाला शेप आ गया, सो मैक्सिमा. अगर नेगेटिव है तो पहले डिक्रीज हो रहा है और फिर इंक्रीज हो रहा है पॉजिटिव की वजह से, सो मिनिमा, ठीक है, इसीलिए ये हो जाता है. सो ये रिजल्ट वी विल प्रूव इट tomorrow along with some inequalities, ठीक है. So anyone wants to ask any question on whatever we have done till now? सर Yes. सर मैं उस इक्वेशन में ये बोल रहा था, इसको इक्वेशन था x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 इंटू x2. तो सर अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, दिस इज अ फिक्स्ड नंबर, दिस इज अ फिक्स्ड नंबर, दिस इज अ फिक्स्ड नंबर. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये नंबर है. वही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट नहीं आएगा. ओके सर. इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको ये लिख सकते हो x1 x2 स्क्वायर
प्लस माइनस x1 x2, वन ठीक है। x2। अब इसको Yes, एब्जॉर्ब कर सकते हो कि अगर देखो दोनों, अगर ये नेगेटिव हो जाता है, इफ दिस इज नेगेटिव देन दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सो ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है बाकी सब पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, इस तरह से भी दे सकते हो, ठीक है। दो केसेस बन जाएंगे ना तुम्हारे। yes, केस 1, x1 x2 is greater than 0, then x2 square plus x1 square plus ये greater than equal, this is greater than 0, right? Case 2, when x1 x2 is less than 0, then you can write x2 square plus x1 square plus x1 x2 equal to x2 plus x1 whole square minus x1 x2, right? You can write like this, and this being negative overall it is positive, so इस तरह से ही prove कर सकते हो। this is also a way to prove it, ये simple है दिखने में, ठीक है। Is it fine? So अब तो बिल्कुल सिंपल हो गया, इस तरह से भी कर सकते हो उसे, yes, बट वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो इसमें रूट्स x2 Yes, अपने आप में नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, देयर इज नो वेरिएबल हियर, ओके। yes sir। ठीक है, सो दिस वे यू कैन प्रूव इट, ये तो बिल्कुल सिंपल आ गया इस तरह से अगर देखोगे तो, क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव है तो तुम्हारा ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर x1 x2 नेगेटिव है तो यू कैन एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ दिस, और यहाँ से इजीली दिख रहा है क्योंकि दिस इज पॉजिटिव, this term is positive and this term is positive, so overall it is positive, right? Yes sir। So this is how also you can view it, yes। इसको चलो रहने ही दो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, चलो okay। So any other question? No sir। Okay, so then I am ending this class. Bye everyone. Thank you for watching this video. To stay updated, please subscribe to our YouTube channel, Cosmos Learning. Happy learning through Cosmos Learning. To watch more, click on any of these cards. Thank you once again.